a very unique topic today. Environmental impact of artificial intelligence. So when you look at this topic, you have four keywords. First is environmental, impact, then artificial intelligence. So we have to understand these four words first. Correct? Then we can write about it. Correct? So I will give you the points. Topic, huh? Introduction. Google, what is artificial intelligence? What is AI? Hey, UPSC batch na? What is AI? Basic definition बताओ. Without Google बताओगे तो भी चलेगा. बोलना Google. What is AI बता. And very good. ये बता मेरे को. Yes, it's a set of programs which enable computer systems to translate, understand, analyze data and more क्या है? Data and languages and generate information. Generate information नहीं ये मैं बता रहा हूँ. बता दो. अरे आना चाहिए भाई. काय बंद कर दे. सांग एकदा बघितलं ना. तर सांग. What is AI? It is a set of programs. क्या करता है programs? It 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 behaves like a human intellectual human intelligence. It almost substitutes human intelligence. It analyzes data. बोलना बड़े. They perform variety of advanced functions, including understanding and analyzing data, making recommendations, and more. Very good. Recommendations and more. Okay. देखो. देख के नहीं, देख के नहीं, देख के नहीं. बंद करके लिख. एक बार बंद करके लिखेगी ना तो वापस लिखने पड़ेगा. It is a set of programs, advanced programs for technologies. Set of advanced programs for technology. See, divide it. Whenever you read also ना, पढ़ाई करते हो ना, आप ऐसे पढ़ेगा कि आपको बिना देखे आना चाहिए. That is the key to success. Even in your college curriculum. Keywords क्या है? Set of programs. क्या करता है वो? It understands and analyzes data and information. Okay, and generates new information. Generates new information. Right? And much more. Gives, provides it. We don't want. It is not your commerce का definition कि एक word इधर उधर टीचर मार्क्स देगी नहीं. अपनी मर्जी. हम लोग जो करने का करते हैं. Google has reported a 13% increase in its carbon footprints.
This rise, this rise was mainly due to increased electricity consumption due to AI tools. This rise is attributed to increased electricity consumption due to AI tools. Studies have shown that AI queries, अभी तो मोबाइल पे और व्हाट्सएप पे भी आ गया AI ना, है ना मेरे? हाँ, so you should understand. Studies show that AI queries use 10 to 33 times more energy than regular Google searches. Then use 10 to 33 times more energy regular Google searches. In fact, image-based AI searches, hmm, image-based AI searches, इतने मुश्किल का, could be using even more energy. When computers are run for a longer time, they generate heat. अंदर the photo के अंदर. When computers क्या बोला मैंने, run for more time, for longer time, they generate more heat. This requires more powerful air conditioning. This requires more powerful air conditioning in the data centers. Air conditioning. All this leads to humidity leads to increase in carbon footprint. लीकेज नहीं करते हैं. अभी गूगल करो ये, इस पे हर एक पे एक एक पैराग्राफ लिखने का. अभी नहीं करती बस करो, पॉइंट दे रहा हूँ. मेरे पास तीन चार ऐसे इंपॉर्टेंट. राइट, रिमेंबर मेजर डिबेट्स और यू कैन से राइट वन पैराग्राफ ऑन ईच. ब्रैकेट में लिखो, राइट वन पैराग्राफ ऑन ईच. तो क्या आपका कंटेंट बनेगा ऐसे का, है ना? फर्स्ट डिबेट, फर्स्ट पॉइंट, एनर्जी efficiency of AI versus its potential benefits. Versus its potential benefits. Next, balancing AI advancement, balancing AI advancement with
एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये दूसरा डिबेट है। थर्ड, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बाय डेटा सेंटर्स। ये 3 पॉइंट्स के ऊपर आप 6 पैराग्राफ लिखोगे, है ना। एक का गूगल करके देखो जरा, कौन सा वाला, बैलेंसिंग एआई एडवांसमेंट, एआई एडवांसमेंट वर्सेस, ऐसे वीएस, एआई एडवांसमेंट वर्सेस एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सेकंड लिखा है ना, और देख के ना टाइप करके आ रहा है क्या कुछ, जो मेरे को ही करना पड़ेगा। तो फोटो काट रहा था, मैं परत ले लो तक ला, तीन था मतलब। क्या मिला, मिला कुछ, एआई एडवांसमेंट वर्सेस एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। नहीं मैंने, हाँ, घर पे देखो, कंटिन्यू। क्या आया, बट थर्ड रहेगी, अभी जो बोला आया आया आया, थर्ड। In 2020, Microsoft announced its planetary computer initiative, a monumental project
aimed at collecting environmental data on global scale and accessible for digital while partnering with environmental organizations and leveraging cutting-edge AI algorithms. Microsoft aims to tackle some of the planet's most pressing environmental issues, from biodiversity loss to climate change. This forward-thinking project serves as more than just an example of corporate responsibility. It stands as a significant काय milestone. काय काय वाटतं काहीतरी येतं नेटवरती सर्व वाचायचं. Is it relevant? Have you got any relevant? ते जाऊ दे मी पाठवतो चल. द्या आता पुढे सपोर्टिंग आर्ग्युमेंट्स नका ठेवू. I don't waste your time. Hello, AI is a revolutionary technology. AI is a revolutionary technology with wide-ranging applications. Wide-ranging applications. Application of AI to corporate and industrial practices. Application of AI to corporate and industrial practices could result in 5 to 10% reduction. Could result in 5 to 10% reduction in global emissions by 2030. ये तो अभी पढ़ा था. AI can enhance climate modeling and prediction. Climate modeling, climate modeling and prediction, enabling more accurate forecast. त्याचा काय फायदा होणार? फार्मर्सचा फायदा होणार, right? If AI can actually make a good proper forecast regarding weather, climate, rainfall, so farmers will plan their farming activities accordingly. So लॉस कमी होणार ना फूडचा, कळलं का? समजलं का ते? Enabling more accurate forecast, informed decision making. Informed decision making. समजलं काय ते? Hello, listen to me also at the same time. What have I said? AI and repeat. AI can enhance climate modeling. आता ठाण्याचं क्लायमेट कसं, क्लायमेट मॉडेल क्लायमेट काय, क्लायमेट मॉडेल काय असेल की या वेळेस एवढा एवढा पाऊस येतो, राईट? असं 3 वर्षाचा ट्रेंड पकडला तर त्याप्रमाणे ठाण्यामध्ये, ठाणे इज नॉट जस्ट दिस ठाणा, इट्स ह्यूज, लॉट्स ऑफ फार्म लँड्स आर देअर. सो द क्रॉप्स, द ट्रीज कॅन बी प्लांटेड अकॉर्डिंगली. कळलं का काय? Enabling more accurate forecasts and informed decision making. More accurate forecasts and informed decision making. Then AI powered smart grids. AI powered smart grids can optimize energy. AI powered smart grids, electricity, can optimize energy distribution, reducing waste and increasing the integration of renewable energy sources, increasing the integration of renewable energy sources. हे स्मार्ट ग्रिड्स काय करणार? वेगवेगळ्या प्रकारची एनर्जी, न्यूक्लिअर एनर्जी किंवा विंड एनर्जी,
They will use all these possible energy resources to generate power. Beginning. This aligns with the energy efficiency mission. This aligns, ALIGN, it aligns with the energy efficiency mission of India's National Action Plan. Of India's National Action Plan on climate change. On action plan on climate change. Hmm. So yeah, next is opposing arguments. AI has a very heavy emission footprint and requires more electrical signals for storing, for processing, storing, and retrieving data. For processing, storing, and retrieving data. The production and disposal of AI hardware, including specialized chips, including specialized chips and cooling systems, lead to electronic waste. Cooling systems lead to electronic waste. तुमच्या सीपीयूच्या आतमध्ये फॅन आहे बघा, लॅपटॉपच्या आत पण आहे, मोबाईलच्या आत फॅन नाही आहे पण कूलिंग सिस्टम आहे. Lead to electronic waste and resource depletion, thus exacerbating. म्हणजे काय? Exacerbate म्हणजे काय? Find out vocabulary. Guess it. काय असू शकतं exacerbate? EXA TRBAT EXA worsening और खराब करना exacerbate worsening exacerbating environmental challenges. Solution. Next point. Balancing AI's climate benefits against its environmental impact. Balancing AI climate benefits against its environmental impact requires a multifaceted approach. A multifaceted approach. Second point, solution. Balance AI advancement with sustainable practices.
practices. Next, third point. Government should mandate carbon footprint assessments. Government should mandate carbon footprint assessments for AI projects. For AI projects. Assessments for AI projects. And last, implementing tax incentives. Implement tax benefits द्यायची कोणाला implementing tax incentives. टैक्स बेनिफिट किसको देने का? फॉर कंपनीज यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी. फॉर कंपनीज यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी इन एआई ऑपरेशंस. कुछ भी पॉइंट लिखने का नाही. मार्क हवेत तर. आता अगदीच तुझ्याकडे 2 मिनिटं आहेत 3 मिनिटं आहेत लिहिलं तर काय करू शकत नाही. And at least writing something is better than writing nothing. But if you want a rank, possibly good, very good marks, you should write in paragraphs strictly. Give examples. एआयचा वापर कुठे कुठे करतात? एआयचा वापर कोण कुठे कुठे करतं? स्टुडंट्स कुठे कुठे करतात? बेसिकली यू स्टार्ट फ्रॉम युअर सेल्फ, राईट. टीचर्स कुठे कुठे करतात? नंतर कॉर्पोरेट कुठे कुठे करतात? करेक्ट. लाईक दॅट यू टू सी. गव्हर्नमेंट कुठे करतं? बस त्यात अपने चार ही लोग हैं, करेक्ट. कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए वो भी लिखने का. देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एक बार आया था सिर्फ, बट आ सकता है. फेक न्यूज. सी माय आइडिया इज व्हाट, यहाँ के टाइम पास नहीं करेंगे. यूपीएससी बैच है, हमने बहुत टाइम पास कर लिया फाउंडेशन. वी हैड ऑल दैट एम्पल टाइम टू थिंक, है ना. आई वुड आस्क यहाँ पे 6-7 लेक्चर रखेंगे हम लोग. आई वुड मैक्सिमाइज द टाइम व्हाटएवर आई. ताकि आप लोग जब ऐसे लिखने जाओगे, अरे ये ऐसे सर ने कहा था, क्या क्या पॉइंट थे याद आएगा. 5-6 पॉइंट तो याद आएगा. आई डोंट से एवरीथिंग यू रिमेंबर, बट इट्स नेचुरल, है ना. व्हेन यू ब्रेनस्टॉर्म एंड थिंक डीपली. और शुरुआत में कभी भी माइंड मैपिंग करो, आप नहीं कर रहे हैं अभी. इफ यू रियली वांट अ रैंक इन यूपीएससी, राइट, यू हैव टू गिव मी पॉइंट. फेक न्यूज मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट से थोड़ा मुझे विदाउट यूज ऑफ मोबाईल. अभी नाईलाज म्हणून सांगतो मोबाईल बघा. ओके. फेक न्यूज अँड डिसइन्फॉर्मेशन ऑन द राइज. डिसइन्फॉर्मेशन ऑन द राइज. और फेक न्यूज अ सिरियस सोशल प्रॉब्लेम. असं अरे लिहू म्हणजे असं अशी वर्डिंग्स येणार ऐसे ते. वुड यू लाइक टू डू सम ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉर 5 मिनट्स एटलीस्ट? कुछ अपना खुद का. ऑलवेज रिमेंबर आई जस्ट टेल यू हाउ टू प्रोसीड. सबसे पहले यू नो व्हाट, इट इज वेरी इजी. क्या बोला? सीरियस सोशल प्रॉब्लम. तूने क्या बोला था, क्या बोल रही? मैं ना थोड़ा सा मैं मेरे को असिस्टेंस के लिए मैं थोड़ा लेके आता हूँ. आई डोंट डिक्टेट एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर. बोलो. ब्रेनस्टॉर्मिंग करो थोड़ा सा. जब आपके हाथ में अब ऐसे आएगा ये फोन, तो शुरुआत में आप एक ट्री डायग्राम बनाओ. ऑलवेज ट्री डायग्राम. शुरुआत में क्या आएगा ऐसा, आया फ्लो चार्ट. फिर ही लिखना.
as a rule. Hmm. Try doing it. Try. 5 मिनट दे रहा हूँ मैं. क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा हम लोग ग्रुप बनाते थे. ऐसे गिव देम ऑल अर्ली, बहुत पहले पहले. बहुत बहुत रैंक पे आए हैं. बाद में किसी ने यहाँ पे गड़बड़ कर दी. एक टीचर ने ग्रुप बनाया और यहाँ से स्टूडेंट को लेके जाके डायरेक्ट क्लास खोला. तब से ग्रुप बनाने का अलाउड नहीं है. क्या हमारा क्या नजर ही. इतना मेरे पास टाइम भी नहीं है अपना अगर करने. ठीक. तो दे हैव डिसअलाउड. यहाँ नहीं, पनवेल में हुआ वो. जरूर बैंक फिर भी एक पॉलिसी बनाए कंपनी. मैं इधर ही मर मर के आता हूँ. मैं कौन सा क्लास. एंड आई विल टेल यू वन क्लियर थिंग. ऐसा नहीं आप ये साल आएंगे तो आपको ऐसे मिल गया. यू मे हैव टू कम फॉर 1 or 2 years. यूपीएससी इज नॉट समथिंग दैट इज लाइक योर एनुअल एग्जाम. ये साल हो गया नहीं हुआ मैं तो क्या, ऐसा नहीं होता. पढ़ाई इज वास्ट. यू माइट टेक 2 years. some people take 5 years also. क्योंकि उसका और कोई दूसरा स्कोप नहीं रहेगा इसलिए दिया रहेगा इसी प्रकार. गिव मी सम पॉइंट्स. एक एक करके देखते. यू विल गेट कॉन्फिडेंस. मेरे पास तैयार है ऐसे. डोंट वरी. यस, इन फैक्ट आई वाज गोइंग टू टेल यू दिस. आप लोग पॉलिटी पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो. डोंट टेल अभी तक पढ़ाया नहीं. यू हैव टू रीड ऑन योर ओन एवरीथिंग. राइट. व्हेनेवर यू आर राइटिंग इन एक्सेल, 4 एंगल्स याद रखना. सोशल, पॉलिटिकल, लीगल. सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल. और पांचवा एथिकल. सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, एनवायरमेंटल और एथिकल. ये 5 पर्सपेक्टिव से हर चीज को एनालाइज करने. यू गेट 5 पॉइंट्स राइट अवे. 5 पेजेस. हो गया. चलो. हाँ. रेलिवेंट. मैंने हाँ बोला मतलब तू लिख के, हाँ ऐसा नहीं. टॉपिक क्या है हाँ उसके ऊपर. स्पेशली इन एथिक्स एंड ऑलवेज राइट. डोंट फॉलो इनटू एनी कंट्रोवर्सी. सोशल मतलब क्या. लीगल में कैसा, ये कोर्ट ना एक्ट वगैरह तो शोज योर नॉलेज. अमेंडमेंट्स क्या हुए. लाइक वुमेन एम्पावरमेंट में नए कौन से एक्ट आए. फिर पॉलिटिकल में गवर्नमेंट ने क्या क्या नया इंट्रोड्यूस किया है. यू गेट. दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ एन आईएएस ऑफिसर. में क्या क्या मालूमात है. व्हाट ऑल यू नो. दैट शोज योर वर्थ, योर से एलिजिबिलिटी टू बी एन आईएएस ऑफिसर. और अभी पॉइंट 5 मिनट दे रहा हूँ मैं. खटाखट लिखते जाने का पॉइंट्स. ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब स्टॉर्म, तूफान आता है दिमाग में. तो आप टेंशन मत लो. पॉइंट्स लिखते जाने का. इट्स अ रफ वर्क. एंड यू कैन कोलेट दैट पॉइंट्स इन सिस्टमैटिक वे. अरेंज देम.
हो गया ब्रेनस्टॉर्मिंग। 10 पॉइंट लेके आ। अभी 1 ही मिनट हुआ है। हो गया। बता। इंग्लिश। बता ना भाई। आगे। सबसे पहले व्हाट आता है। व्हाट इज फेक न्यूज? ड्यू टू अ proliferation, right, listen, the proliferation of social media, right, or you can, or you, what you call today media explosion, even the common man, right, are get an opportunity to voice their opinions. Often these opinions are not corroborated or not you can say verified. So unverified information spreads across media, leading to fake information or fake news, or is what we call fake news. अपने हिसाब से मैंने कुछ लिखा, अपने हिसाब से बनाओ, है ना कि नहीं? इसने किया, why does this happen? There is, the reason is innate. Man by instinct is curious, so he wants to gulp down as much information as possible, whether it is true or not. Okay, so it is a curiosity that propels us to look into information and even accept it without verification. Then you talk about various social media. Today we have various social platforms, which are those Twitter, then Facebook, और यूपीएससी का पढ़ाई करने की स्नैपचैट, बोला गया उसी का नाम। आगे, इवन माय डॉटर, अरे 10th में दिन भर बर्थडे को नया मोबाइल क्यों लेके ऐसा हो रहा है? थोड़ा आगे। हाँ, तू नहीं है क्लास में, ऑब्जर्वर है। बंजी ने बोला। वेरी गुड। हाँ, गुड पॉइंट, कैन यूज दैट। Remember, fake news is basically forward that violence. We create a situation of panic
might affect the relations with another diplomatic relations with another. ज़्यादा हो रहा है. हाँ, it is possible. But it is wild है. You systematically do it ना. पहले आप from student life से शुरू करो. Okay. चलो. Good. चलिए शुरुआत तो की. तू कर ले. Propaganda, spreading propaganda, and generally it is that to manipulate certain ideologies, and in society it can create echo chamber situation where echo chamber situation where people only think about their ideology, and it can lead to riot and illegal right to information, and then there is no authentic and prime source of that statement. Authentic or reliable source. Very good, very extremely good. तू कर ले. हाँ. In fact, the fake news has become a part of our lives. So much so that in Google, in when you go to Google News, there is a column about fake news alert. देखा है कभी? Yes, yes, okay. Right on. Fake news means a fabricated information which has no verifiable, source. Often, क्या अटेंडेंस शीट आली का? आली अटेंडेंस शीट? घरी घेऊन जाते काय? Verifiable. Variable source. Often, fake news is mere propaganda, intentionally designed. Mere propaganda, intentionally designed to mislead the reader. अभी आप गूगल करो और मुझे बताओ एग्जांपल्स ऑफ फेक न्यूज. Yes, right, right. Manageable. It was made from cow urine, na? Yeah. Yes. And people are made to drink. They drank cow urine. See, it all is in UP and all. करेक्ट. जेल में डालना चाहिए था. और कुछ? Imagine people drinking cow urine here. Hmm. Well, I want solid example which have led to riots or whatever. है कुछ इसका case study? Fake news that have led to riots. Type करो Google पे. Fake news that have led to riots.
violent backlashes. I had to read the काय स्टोरी सांग पूर्ण. ती but how does fake news come here? Right, fake news leading to riots. Google करा. केस स्टडी आहेत, भरपूर आहेत. राजस्थानमध्ये कोणातरी मारलं होतं. देर नो चाइल्ड किडनॅपर्स. फेक न्यूज थोडी. मला काय हवंय माहिती, फेक न्यूज दिल्यामुळे राईट झाली अशी आहे का काही केस स्टडी? ओके, राईट डाऊन. वेट सर, लेट यू फाइंड आउट आफ्टर गोइंग होम. येस, there were fake news. Correct. See, the rise of yellow journalism ये पहले से है. Rise of yellow journalism is seen as a first major instance of fake news. The rise of yellow journalism is seen as the first major instance of the spread of fake news. Next, after you write down four instances, four instances, ये घर जाके करना है. Instances slash case studies of fake news. ये रामदेव बाबा वाला अच्छा एग्जाम्पल. There is a marked difference between
misinformation and disinformation. Anyone knows? Misinformation and disinformation. मतलब if misinformation में क्या तेरे को खुद को मालूम नहीं है वो सही है कि गलत है, but तू स्प्रेड करती है, you think that it is correct. और डिसइंफॉर्मेशन मतलब मेरे को मालूम है ये झूठ है, फिर जानबूझ के मैं स्प्रेड करूंगा। अरे क्या लिखा है अभी तक? Misinformation is false information, but the person who shares it online believes it to be true and shares it without any personal agenda. Hmm. Disinformation is false information, and the person who is disseminating it knows it is false. Fake news can lead to A. Fake news can lead to A. Polarization. What is polarization? Anyone? पोल्स किती आहेत जगात? किती आहेत? समजा काही लोकांना नॉर्थ वर पाठवलं त्यांनी साऊथकडे बघायचं नाही, साऊथला पण नॉर्थकडे बघायचं का? असं करतात टू डिस्क्रिमिनेट, राइट? हिंदूज वो साइड, मुस्लिम्स वो साइड, दोनों एक दूसरे को देखेंगे भी नहीं, राइट? हम लोग डिवाइड करते ह्यूमैनिटी को, काले लोग उधर जाओ, गोरे लोग इधर जाओ, ब्लैक एंड व्हाइट. So there are different types of polarization where people are divided completely between in two parts. मर्द लोग वहां जाओ, औरत लोग वहां. Polarization on often along religious or ethnic lines. Ethnic मतलब काला गोरा. Often along religious or ethnic lines. डिस्क्रिमिनेट मतलब क्या? ये होशियार है तो मैं इसको ज्यादा फेवर करूंगा. डिस्क्रिमिनेट, चल इट इज हाउ एग्जांपल दे रहा हूँ. दैट इज डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेट करता हूँ, कभी कुछ देने करेगा, कुछ इनिशिएटिव उस पर बुलाऊंगा मैं. डिस्क्रिमिनेट करते हैं ना टीचर. डिस्क्रिमिनेशन, पार्शियलिटी लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन. पक्षपात इन संस्कृत. ओके. Misleads people on important issues. Either you can talk about CA. Misleads people on important issues. Then hardens attitudes. अभी अभी लेटेस्ट वक्फ डब्ल्यू की वक्फ है ना वो बिल. हाँ, बोल बोल वापस बोल. ए, वो क्या है? मतलब किसी रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए कोई लैंड डोनेट करता है इन द नेम ऑफ समवन डोनेट्स लैंड ऑफ द नेम ऑफ समवन नहीं, मुस्लिम्स ने बहुत बहुत मुस्लिम ने लैंड डोनेट किए हैं टू द रिलीजियस organizations to spread religion,
build madrasas, और ये लैंड इंडिया का है, करेक्ट? So they want to seize this land so that it covers any type of anti-national activity. तो ये लैंड किसका है एक्चुअली? देश का है ना, स्टेट का है, तो ये कब्जा करना चाहते थे, तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस चल रही। वो पॉलिसी का जो है, वो जो लॉ आया था, उसको ये किया कि गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द वर्क ऑफ लैंड। समझा? बात तो पता होना चाहिए, यूपीएससी। हाँ, ना माहिती होतं का? कल्याणी, harden attitudes and stereotypes, harden attitudes and stereotypes about individuals or groups. Trigger riots, trigger riots in extreme cases, trigger riots in extreme cases. कोई डाउट? हाय, डाउट पूछा ना? अभी हाँ बोला तुमने, इसलिए पूछा। अभी व्हाई इज मिस इन्फॉर्मेशन ऑन द राइज? यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ सोशल मीडिया, लाइक, पता करो दुनिया भर का सब लिखो से, लिखो व्हाई इज मिस इन्फॉर्मेशन ऑन द राइज? देयर इज प्रोलिफरेशन ऑफ हाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक, एक आठ के साथ नाम लिखो। ड्यू टू अ proliferation of social media platforms like, बंद करूँ एसी? किधर है? मेरे को भी ठंडी लग रही। तू पुलिस ऑफिसर बन रहा है ना, ये ऐसा? क्या किया तूने? एसी को क्या किया? ठंडा और ठंडा हो गया बेवकूफ। हाँ ठीक। लिखा क्या? स्नैपचैट पूरा दुनिया भर का लिखा। वाइडली अवेलेबल इंटरनेट कनेक्शंस एंड चीप डेटा प्लान्स, widely available internet connections and cheap data plans have enabled people of all ages and professions, have enabled people of all ages and professions to access। मेरे फेसबुक पे हमारे बिल्डिंग का झाड़ू वाला भी है। have enabled people of all ages and professions to access social media easily। क्योंकि उसके नाम से उसको पता ही नहीं चला, वो है एकदम हीरो रहता है फोटो, बाद में समझा। मैंने फर्स्ट टाइम, मैंने गॉगल बिगल डाल के एकदम टोपी भी डाल के, दैट इज आई सम स्टूडेंट ऑफ माइन। मैनी फर्स्ट टाइम इंटरनेट यूजर्स, मैनी फर्स्ट टाइम इंटरनेट यूजर्स लैक मीडिया लिटरेसी। तो गाली भी देते हैं बिंदास, दुनिया भर के लोग देखेंगे। लैक मीडिया लिटरेसी,
Even mainstream media has also fallen. Has also fallen for misinformation on many occasions. Companies like Meta है ना हमारे पास अभी, refuse to fact check information. Fact check information. अब इसमें आप और पॉइंट्स डालो. Then solution. बोलो. येड़ा बेड़ा बनो देखे. बराबर बोल. Specify. Encourage media literacy and behavior. Don't share posts. हाँ, पॉइंट्स में लिखना नहीं है. अभी लिखो पॉइंट्स में. डोंट शेयर. खबरदार पॉइंट्स में लिखना. अभी लिखो. यू राइट पैराग्राफ. डोंट शेयर posts unless you check its credibility. Credibility. Verify images as well. Right? In the long term, in the long term, the only way, the only way to navigate, the only way to navigate this toxic ecosystem is to raise awareness. चल ले लिया तेरा पॉइंट. Through media literacy. Through media literacy. इससे वो भी बताना. Raise awareness मतलब क्या? वो घोषणा करायची काय अशी राहून पब्लिक में. No. Next essay. मैंने एक ऐसे लिखा है, बोले क्या तू एक पण ऐसे लिहिला नाहीये इतक्या वर्षामध्ये. 3 वर्ष येतेस. 3 साल तो आ रही है कम से कम ना. थैंक यू. एक ऐसे लिखा है मैंने. और दाखव. राइट डाउन. ये एब्स्ट्रैक्ट ऐसे तूने लिखने का है. एक तो मैं लिख के लाया हूँ, वहां पे बैठा था घर में.
लिख एजुकेशन, हाँ, is the progressive discovery, is the progressive discovery of our own ignorance. तू है क्या ग्रुप पे मेरे? तो डिटेल किस करने वाली? यू नो माई नंबर मैन, तो डिलीट क्लास है जाओ. बघितलं? नहीं लिखो, बिकॉज इट इज टू बिग एन एसे, और थोड़ा एडिट करना पड़ेगा. नहीं है ना, देना भी नहीं. I don't. Education is the way to edit it. That's right. Is the progressive discovery of our own ignorance. ये आया था एग्जाम में, ये आने वाला था, एक्सपेक्टेड है. एजुकेशन इज द प्रोग्रेसिव डिस्कवरी ऑफ आवर ओन इग्नोरेंस. But I'm going to edit it. I've given a raw material. Hmm? Yeah. Education is often perceived. Education is often perceived as a means of acquiring knowledge and skills to succeed in life. Throughout our educational journey, throughout our education journey in schools, colleges, and universities, we accumulate a vast array of information. We accumulate a vast array of information. However, array, ARRAY, array of information. However, ये एक्चुअली आएगा प्लेस में, इसलिए मैंने भेजा है मटेरियल, लेकिन इसको मैंने 11 पेजेस भेजे, तो इसको एडिट करके प्रॉपर क्रिस्प पैसे बना रहा हूँ अभी. However, beyond the vast array लिखा है ARRAY. However, beyond the mere accumulation of facts and figures, beyond a mere accumulation of facts and figures, education has a more profound purpose, that of enabling individuals, that of enabling individuals to discover their own ignorance.
The title of the essay. क्या है title? Education dot 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 लिखो. Education dot 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 ignorance है ना title. 3 डॉट लिख सकते हो आप. Even in the exam. In the actual essay. Education dot 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 ignorance is attributed to the American philosopher and author. Attributed to the American philosopher and author Will Durant. Will WILL DURANT. देखा Durant. These insightful words encapsulate मतलब पूरा एजुकेशन को एक कैप्सूल में डालना. Encapsulate the true essence of education. At first glance, next paragraph. At first glance, the phrase might appear paradoxical. The phrase might appear paradoxical. How can the pursuit of knowledge? How can the pursuit of knowledge lead us? How can the pursuit of knowledge lead us to acknowledge our own ignorance? The answer lies in the nature of education itself. The more we learn, comma, the more we realize that there is an immeasurable amount of knowledge. There is an immeasurable amount of knowledge still waiting to be uncovered. देखो ये मैंने आपको एक बेसिक आउटलाइन दे रहा हूँ ऐसे कि मतलब पूरा दे रहा हूँ ऐसे इसमें अपने एग्जांपल्स भी डालो. रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट तरफ. Throughout history, I am giving this because it is likely to come in this year's paper. Throughout history, humanity has made incredible advancements in various fields, from science and technology to arts and philosophy. Every groundbreaking discovery and invention has been built upon
the collective efforts has been built upon the collective efforts of countless individuals seeking to expand seeking to expand their understanding of the world. However, for every mystery unraveled, countless other mysteries emerge. हम लोग भी देखो ना, अगर एक सोल्यूशन है उसके लिए हमको और 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना? मैं इतना ही बोलूंगा कि ये ऐसे आएगा, ये सब नहीं आया तो क्या, कुछ और आया तो क्या, ऐसे ऐसे आई ही नहीं तो क्या, कितने आंसर क्वेश्चन पूछेंगे आप? पूछेगी नहीं? और एवरी मिस्ट्री अनरेवल्ड नेचुरल है वो. Countless other mysteries emerge, urging us to delve deeper into the vast expanse of human ignorance. Embracing the idea that education is a discovery of ignorance fosters humility and curiosity. Embracing the idea, that education is a discovery of ignorance fosters humility and curiosity. और भी सीखने की मन में इनकी इच्छा होती है, और हम लोग बहुत देर शाने ऐसे समझते हैं लोग, है कि नहीं? The awareness of our limited understanding, humility, नम्रता. अरे रुके, तो पढ़ लिख तक. The awareness, लीना, नवीने, ये येड़ा है क्या? The awareness of our limited understanding humbles us. It reminds us that no matter how much we learn, how much we know, awareness of our, if you have missed out, please ask me. Don't worry. Awareness of our limited understanding humbles us. Humbles us. कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है ऐसा. Right? Humbles us. Reminding us that no matter how much we know, there will always be more to learn. It prevents arrogance and encourages open-mindedness. Encourages. It prevents arrogance and encourages open-mindedness, inviting us to consider, inviting us to consider alternative perspectives
and remain receptive to new ideas. Remain receptive to new ideas. Great minds throughout history, like Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, APJ Abdul Kalam, and Homi Baba were driven by an insatiable curiosity. मतलब कभी भी सेटिस्फाई नहीं होने वाला. Were driven by an insatiable curiosity that fueled FUELED their groundbreaking work. Next paragraph. Furthermore, और दो पैराग्राफ, तीन चार है, सॉरी. Furthermore, नहीं है ना टाइम. मैं बहुत एडिट कर रहा हूँ तुम्हारी. Education goes beyond. Furthermore, education goes beyond the boundaries of textbooks and classrooms. It encompasses life itself. It encompasses life itself, comma, its experiences, interactions with others. Its experiences, comma, interactions with others, and self-reflection. Embracing opportunities and learning experiences. Embracing opportunities and learning experiences. Brings us closer to a profound understanding of ourselves and the world around us. To a more profound understanding of ourselves and the world around us. Today, next paragraph, today, information is readily available at our fingertips. The internet provides us with a deluge means a flood. The internet provides us with a deluge of data, often leaving us the internet provides us with a deluge of data, often leaving us with a superficial sense of knowledge. However, true education requires more than mere consumption of information. Full stop.
mere consumption of information. Full stop. It demands critical thinking, analysis, and an awareness of gaps, in our understanding. True education is a collaborative journey. True education is a collaborative journey where teachers and students explore the vast terrain of knowledge together. The vast terrain of knowledge together. Of knowledge together. In conclusion, भी conclusion लिखो. कितना हो गया पेजेस? बहुत क्या बहुत? 1500 वर्ड्स हो जाएंगे? कितना होंगे? तो बोलता हूँ ना एग्जाम्पल कौन से डालने. रिलैक्स. एक काम करो, पहले हम लोग खत्म करते हैं बाद में. कितने? अरे वर्ड्स कितने? ऐसे काउंट नहीं करने के रहता है. जस्ट काउंट वन नंबर ऑफ लाइन एंड वर्ड्स इन वन लाइन रैंडमली. क्योंकि एक एक वर्ड काउंट करते हो बस. ऐसे कैसे हो सकता है इतना डिफरेंस? दो और 400 500. काय पण बोलते ते एक एक शब्द बोलतात. बोल बोल. कितना है वकील? हाउ कैन इट बी सच ए डिफरेंस? 500 है. काउंट कर. और तो 400 पर नीचे ये 200 बोल रही है. गिने जल्दी सब. गिने अपना टाइम पास होगा. एक भी गलत हो गया ना तो वापस गिनना पड़ेगा. है अजून लंबा. स्टोरी इज नॉट ओवर. सब कुछ तो वापस कर चल. अच्छा समझते बस 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 नहीं कर रहा. ओके राइट. इन कंक्लूजन इन कंक्लूजन द आइडिया इज वेदर दैट essay will suffice or not. What no? अरे वो एक पेज का 300 वर्ड है. आर्ग्यू मत कर रहे, मेरे को एक्सपीरियंस ज्यादा है. 250 तो कम से कम है वो. कितना? कितना हो गया? हाँ हो गया ना फिर. उनका जाऊन दे काय बरोबर है. इन कंक्लूजन education is a profound and lifelong process of discovery. Of discovery
It is not just about amassing knowledge. Amassing knowledge, but recognizing the boundlessness of what we do not know. Boundlessness of what we do not know. Embracing our ignorance fosters humility, comma, fosters humility, comma, curiosity, and a deep appreciation for the value of learning. As we continue to explore and question, we become more enlightened. We become more enlightened, not only about the world, but also about ourselves. Education should rightly instill a desire for lifelong learning, a desire for lifelong learning. That's it. अभी यहाँ पर because it is find words, you know what you should do is I'll tell you where. You written ना ये निकालो. Great minds throughout history. सेंटेंस कहाँ है? उसके बाद स्टार करो. Great minds throughout history. ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क के बाद स्टार करो. उसके बाद राइट अबाउट द क्वेस्ट फॉर नॉलेज बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन. इसके बारे में लिखने का थोड़ा. राइट 200 वर्ड्स तो. फिर राइट अबाउट एपीजे अब्दुल कलाम. How, in spite of being poor, how he had a let's say insatiable desire for knowledge, है ना. और किसका नाम लिखा है? अब्राहम लिंकन का लिखो. एंड बी आर अम्बेडकर. आपको आईएएस में रैंक चाहिए तो आईएएस में रैंक नहीं मिलेगा. ये चार लोग का लिखना. यू आर राइट. बट हाउ मेनी ऑफ द पीपल नो अबाउट कॉपरनिकस? यू नो अबाउट हिम. कॉपरनिकस थ्योरी ऑफ वही ना घूमता है वो. किसका है क्या? किसका थ्योरी जुटलाया? कॉपरनिकस से थ्योरी बनाया ना वो कि अर्थ एंड ऑल रिवॉल्व. किसका थ्योरी जुटलाया? हुज थ्योरी डिड ही डिथ्रोन? नहीं मालूम ना तो क्या क्या लिखूंगी? किसका थ्योरी बोलो? टोलेमी.
Ptolemy. Ptolemaic idea of universe was what? Earth is stationary, sun moves around Earth. किसका था? Ptolemaic. मालूम नहीं? जियोसेंट्रिक नोशन ऑफ द यूनिवर्स, और वो कौन सा है? हीलियोसेंट्रिक। क्या मालूम था? नहीं, लिखने वाले थे इसलिए पूछा मैं, मालूम था क्या? तो नहीं मालूम, नहीं। यू कैन राइट इफ यू आर वेरी श्योर। टोलेमिक का पढ़ो पहले, टोलेमी। ठीक है, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खाई है। ओके, ठीक है, क्लियर। आई एम नॉट बोस्टिंग, बट फैक्ट इज यू शुड रीड रीड एंड रीड। राइट, मैं भी बहुत पढ़ता हूँ अभी भी। तो बैग में 3 बुक्स है मेरे। क्या करेगा, आज मेरा लेक्चर था इधर, जस्ट एमए का लेक्चर था किधर, नागपाड़ा में एक जगह पे। एमए को पढ़ाता हूँ मैं। लेक्चर खत्म हो गया 3 बजे। फिर बिरयानी बिरयानी खाया कुछ तो, डुलकी भी लिया एक। फिर भी 2 घंटे बाकी है। तो आई वेंट टू द टी प्लेनेट, वहां पढ़ा था मैं हमने। कैट बैठा, बस पढ़ा, फिर यहाँ आया। रीड वेर एवर यू गेट टाइम एंड वेन एवर यू गेट टाइम। रीड वॉट यू लाइक। अभी आपका एक ध्येय है ना यूपीएससी का क्रैक करने का, तो रीड 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 अबाउट वेरियस लीडर्स। ये जनरल बुक्स पढ़ो। हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री कितना इंटरेस्टिंग है ना? आता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री? पता ना, बेसिक पर ऐसे बताना चाहिए, खट 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 खट। वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना चाहिए बता। बस, कोल्ड वॉर नहीं है। कोल्ड वॉर में कैनेडी की ट्रीटी किसके साथ हुई थी? विच रशियन प्रेसिडेंट? नहीं मालूम। क्रुश्चेव, याद रख, क्रुश्चेव। ठीक। विच प्रेसिडेंट हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर इन यूएस? ढूंढो, अभी ढूंढो। After that, take some essay topics which are likely to come. Which US president had the longest tenure? Is it Ronald Reagan or Abraham Lincoln? बताओ कौन था? सिंपल क्वेश्चन है, फटाक से बताओ। विच काय चल, तो जन पैदा होके प्रेसिडेंट क्या क्या कुछ भी। विच यूएस प्रेसिडेंट हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर? 2 टर्म से बहुत तो लोग को थे। या बिफोर वी go for the next lecture, I want to go through these topics, please. One, when the winds of change blow, write down. When the winds of change blow, some build walls,
while others build windmills.